Welcome back in my new video, guys. This is Shivan Gupta. So in this video, we'll continue a chapter 1, nutrition in plants. So we have left it here till header topic. We'll study after that. So wait for a minute. These are today's notes. You all can see. Okay. Where is the food made in plants? So guys, जैसे आपके किचन में फूड बनता है वो आपकी फूड फैक्ट्री कहलाती है. ऐसे ही leaves are called as the food factories of the plants. Okay, where food is made and transported to different parts of the to different parts of the plant. This process of the transfer of food from leaves to different parts of the plant is known as, if anybody of the viewers know watching this video, they can answer in the chat box. This process is known as translocation. Okay, guys. Leaves are known as the food factories of the plants, as they are the places where food is prepared. Different parts of the plant, like roots, gather raw materials from the environment and then transfer them to the leaves, where photosynthesis takes place. Okay, guys. So mainly roots gather the raw materials from the environment and then transfer them to the leaves. Okay, तो ये जो सारे raw materials हैं, तो ये इनका जो मेन है वो इनको कलेक्ट करता है. वो कौन है? रूट्स. Transportation of water and minerals in plants. The roots of the plants absorb water and minerals of the soil, then transport them to the leaves via stems and branches. Okay, guys. So as we have learned in the last line that roots gather the raw materials and transfer. Here this is also written, but roots carry raw materials and then transfer them to the leaves. How do they transfer? Okay. Mainly there is a pipe. Okay. For example, the food is passed from our to the stomach from the esophagus, that is called the food pipe. Similarly, the foods, the water and minerals of the soil are transported by the roots to the leaves via stems and branches. Via का meaning मतलब किसी के द्वारा. Let's see its synonyms. See, through, by. Okay. See, this is the bud. It's an enclosed flower. Glucose moves up to the growing bud. ये क्या देख सकते हो कि आप soil में से glucose आ रहा है. Water and minerals from soil. Glucose made by photosynthesis. Stem. Let's take a look to our book. We have yes. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Guys, in the last class, you might have heard a word that is stomata. तो guys, stomata क्या करता है? Inhalation और exhalation में काम करता है. Okay. अब carbon dioxide is a necessity for photosynthesis. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो रही है, who is doing this? It is done by stomata. Stomata tiny pores होते हैं. किसमें present होते हैं ये? Yes, it is present. What I say that it's present in the leaves. Yes, guys, we'll see where it is present. Yeah, I'm also a little bit confused and aquatic and that. It is a little bit hanging. Sorry for that. See, wait. See, stomata, also called stoma, plural stoma, microscopic openings or pores in the young leaf. Stomata generally underside of leaves. Yes, guys. यही मेरे को थोड़ा सा
एक्वेटिक प्लांट्स में यस दैट इज ओनली माय प्रॉब्लम, मैं कंफ्यूज था कि भाई कहाँ रहता है स्टोमेटा। सो गाइस मेनली अपने जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें अपर साइड पे रहता है, और लोअर जो अपने नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो उन्हें अंडर सरफेस पे रहता है, अंडर साइड पे। So as I've told you, this stomata works as an inhalator and as exhalator. See, inhalation of CO2. There are tiny pores or holes present on the surface of the leaves called stomata that take in the carbon dioxide present in the air. So use this diagram you may draw, guys. Guard cell opening, stomatal opening, presence. See. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots. अब guys ये vessels का नाम क्या होता है? Comment section में जल्दी से बताओ. You have definitely studied these pipes in your last class. These pipes are called xylem and phloem. They together make up the vascular bundle. This you'll study later study in our chapter 11, transportation of plants and animals in plants and animals. So water and minerals are transported to the leaves by the xylem vessel, whereas the fluid molecules are transported to the leaves through phloem by the through the phloem vessel. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about, see guys, as I have told you, we learn it about in chapter 11. Want to know why special tips about the leaves? Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food, but other parts of the plant cannot. Answer is they contain chlorophyll. The leaves have a green pigment called chlorophyll. Chlorophyll के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ते हैं. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from CO2 and H2O. Since the synthesis food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. So guys, photosynthesis तो अपन ने पढ़ लिया था. Photo means light, synthesis means combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in plants in the form of food. The sun is the ultimate source of energy. Okay, guys. Let's study from the notes. Presence of chlorophyll. This we have studied only. I'll read it again for you. A substance called chlorophyll is present in the leaves of the plants. It is a green colored pigment. अब इसका green color मैं बताऊंगा अभी. The chlorophyll not only provides green color to the leaves, but also helps in the process of photosynthesis. Chlorophyll captures the sunlight and along with other raw materials prepares the food in the leaves. This process of photosynthesis only occurs in the daytime in the presence of sunlight. Hence, it is called photosynthesis. Photo means light. अब एक bold highlighted word था कि sun is called the ultimate source. अब can you imagine? अब आपको खाना plant से मिल रहा है, plant है animal से, तो sun ये ultimate source कैसे हो सकता है? You'll be seeing me here. So ये कैसे हो सकता है? Let's study. So basically guys, अगर आपने पहली लाइनों पे ध्यान दिया होगा तो जो फूड प्रिपेयर होता है ये फोटोसिंथेसिस के कारण होता है, और फोटोसिंथेसिस सनलाइट के द्वारा ही हो रहा है. मतलब सनलाइट भी फोटोसिंथेसिस को के लिए चाहिए. In the absence of sunlight, the process of photosynthesis would not take place. So guys, अब रिलेशन बनाओ इनमें. As for sunlight, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से फूड मिल रहा है, फूड हमको प्री प्रोडक्शन होके हम में से कोई फ्रूट खाते हैं, हमको वो मिल रहा है, प्लांट्स हमको उससे ऑक्सीजन दे रहे हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मतलब जो
व्हाट आई एम सेइंग दैट फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। जो अपने जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं, ये तो बोला गलत क्या की मैंने, ठीक है, जो पहले वाली लाइंस गलत थी। जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं वो अपने ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स अपने इनको खाते हैं, हर्बीवोर्स को। देयरफॉर जो अपने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एनर्जी तो सबसे मिल ही रही है ना। आप खुद सोचो, अब देखो, इसको पढ़ो। We know that plants use solar energy to make their food. The herbivorous animals depend on plants for their food, depend upon the plants for their food. Carnivore animals depend upon the herbivorous animals for their food. Therefore, all of the living organisms, directly or indirectly, receive their energy from the, yes. Now let's study about cells. अब ये बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप सोचोगे हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, तो अपने सॉरी, a body is totally made about no it's totally made through cells. अब सेल्स क्या है? सेल्स जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स है, they're this tiny microscopic units that are the functional structural unit of life. हमारे जिस काइंड से हमारे सेल है उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर होएगा, ठीक है। सारे सेल्स, हमेशा ये ध्यान रखना कि ऑल ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आरंट सेम, ओके। कोई रिप्रोडक्शन के सेल्स अलग होते हैं, अपने जो रेड ब्लड सेल्स अलग होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स अलग होते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट, अपने बहुत सारे सेल्स अलग होते हैं। अभी आप 8th क्लास में आओगे तो आपको और पता चलेगा, ठीक है, अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, ओके। बहुत अपने सेल्स अलग होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं, फंक्शनल, मतलब सेल्स के बिना अपन जी जी तो क्या सकते हैं, अपना ऑल ओवर अपना हार्ट भी सेल्स से ही बना है। सेल्स नहीं होंगे तो लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल। सेल्स जब टुगेदर होते हैं, जब हमको टिश्यूज मिलते हैं, टिश्यूज से हमको ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन से हमको पूरी अपना, एक मिनट, तो कुछ गलत होना बता रहा हूँ। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, organs combine to form a human body. You understand? Okay. I hope that you all have understood. मतलब इतने अच्छे समझाने के बाद भी नहीं आया तो फिर guys, what can I do? तो गाइस, जैसे अपन को अपना ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑल ओवर अपना ब्रेन ही प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल्स को भी एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, उसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी जो सेल, अब जैसे आपके ब्रेन को भी कोई कंट्रोल करे, अपने मतलब अपनी बॉडी को क्या कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। अपने जो सेल होता है, ये न्यूक्लियस जो सेल है, इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस अपने आप में क्या है? कंट्रोल सेंटर है वहां का। अपने जो जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं ना, ये अपने जो हेरिडिटी होती है जीन्स के कारण, ये सारे जीन्स कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में अगर आप और डिटेल में जाए तो वेरी टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये अपनी ह्यूमन बॉडी में 46 होते हैं, 46 में से 44 अलग क्रोमोसोम, मतलब 44 सेम क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। These 2 chromosomes decide the sex of a baby, whether it is a female sex or a male sex. थोड़ा हायर लेवल का हो गया पर मैं आपको बता देता हूँ, ओके। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर अपने जो X, मतलब सारे X तरह के, फीमेल में 46 के 46 X क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में
सारे एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बट एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर अपन को मेल सेक्स चाहिए तो एक्स और वाई फर्टिलाइज होते हैं, तब हमको मिलता है मेल। फीमेल चाहिए तो जब एक्स एक्स के ग्रुप बनते हैं तब होती है फीमेल। इनका स्ट्रक्चरल कुछ ऐसा ही होता है। देखो इनका इनका भी रुको पढ़ा, तो एक मिनट रुको, एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। So, boy or a girl. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction of the determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg. Recall chapter 8, ये तो आपकी class 8 का है. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. Two chromosomes of these are the sex chromosomes named X and Y. A female has two X chromosomes, while a male has one X and a Y chromosome. The gametes, eggs and sperm, have only one set of chromosome. The unfertilized egg has always one X chromosome, but sperms are two kinds. One has X chromosome, other has Y. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at the fertilization, the zygote would develop into a male child. X X हुए तो ये नहीं, X और Y का हो रहा है तो बॉय बन रहा है, X X का हो रहा है तो गर्ल बन रहा है। चलो इसको हटाते हैं। Let's open class 7th chapter 1. ये आपकी 8th क्लास में पढ़ोगे आप। ओके। और न्यूक्लियस के जो सेल को एक तरफ एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक अपने आप में जेल लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या करता है, अपने सेल ऑर्गेनीज करता है, कलेक्ट करता है। देखो सेल ऑर्गेनीज क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट, जो उसके फंक्शंस, जैसे सेल को एक्सक्रीशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, उनमें ये अपना साथ देते हैं। तो different cell organs are mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, and lysosomes. Mitochondria क्या help करती है, produces energy for the cell, produces lipids and proteins in cell. Golgi helps in exporting materials, excretion में, lysosomes digestion में. एक और मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं सबका बताऊंगा। अपने 3 चीजें होती है सेल में, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जबकि ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड्स, उनमें एक एडिशनल लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन तो होती है, एक एडिशनल लेयर और होती है, वो तो होती है दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है गाइस, ये अपनी होती है सेल वॉल। अब मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। Wait for a minute. Yes. देखो, chloroplast and the process of photosynthesis. ठीक है, chloroplast are the special cell organelles that are found in only in plant cells. अपने तो mitochondria ये सब फाइंड कर रही है, जबकि इधर तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में फाइंड करती हैं। ये फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्लांट सेल कहलाते हैं और इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट मेनली ग्रीन इन कलर होता है। इसी की वजह से अपना क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। द क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स। द इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स स्ट्रोमा एंड thylakoid stacks. The chlorophyll molecules are present on each of the thylakoids. The chloroplast convert the sunlight into sugars that are used by the plant cells. Sugar यहाँ पर ग्लूकोज का मतलब है. Hence, chloroplasts allow the conduction of the process of photosynthesis. The chlorophyll that can absorb the sunlight is present inside the chloroplast. When the light of the sun hits the chloroplast and the chlorophyll, the light energy is converted into chemical energy and found in components such as ATP, adenosine triphosphate, and in NADPH, NADPH, NADPH. Then these energy molecules move into stroma. Yes,
अब एक आपको प्लास्टिड्स का पढ़ाते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ी है। अगर आपको इनके बारे में डिटेल और जाननी है तो आप देख सकते हो। ओपन अपने सब बताऊंगा मैं। देखो वैक्यूल में फूड कलेक्ट होता है, तो प्लास्ट ये सब तो आ ही गए। में भी सब में क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स। Where are the plastids? I guess not. Guys, let me find the plastids. अपने जो ग्रीन कलर होता है पिगमेंट, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन कलर आता है। जहां भी आपको ल्यूकोवर्ड दिखाई में आ जाए, उसका मतलब ऑलवेज व्हाइट इन कलर। क्रोमोप्लास्ट कोई से भी कलर के हो सकते हैं, जैसे रेड हो, ब्लू हो। ओके, you might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell of the Tradescantia leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf. These are called plastids. Green color plastids, they provide green. Yes. बाकी आप इसमें 8th में पढ़ सकते हो गाइस। आज बहुत डिटेल में हो गया, पर गाइस आपको आना चाहिए सब कि भाई सेक्स क्रोमोसोम से एक्स और वाई आपके आउट ऑफ कोर्स थे, फुल्ली आउट ऑफ कोर्स थे, पर as my teacher has also told me, so I have thought the right to tell you. So that's all for today, guys. Bye bye. Have a nice day. Shut the cap.